गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन इज डिफाइन एप्टीट्यूड एज एन इंटरनल एटीट्यूड डिटर्मिनेट और डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट पूछ रहा है कि डिफाइन एप्टीट्यूड एज एन इंटरनल एटीट्यूड डिटर्मिनेट। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट यू विल राइट, वो भी 2 मार्क में ही लिखना है, मतलब 2 लाइन। वैलिड क्वेश्चन तो पूछा गया ना एग्जाम में, ऐसा नहीं कुछ भी लिख कर ले आए हो, किसी टेस्ट सीरीज का तो नहीं है। इन्होंने क्या लिखा है कि एप्टीट्यूड इज इनबॉर्न क्वालिटी और नेचुरल एबिलिटी ऑफ पर्सन, और नेचुरल एबिलिटी टू परफॉर्म एनी पर्टिकुलर एक्टिविटी की जगह टास्क लिखना चाहिए। एंड इट इज इंटरनल एटीट्यूड determinant because it influences person's interest, confidence toward other activities। बाकी लोग का क्या रहा है, क्या लिखोगे इसके ऊपर? 2 लाइन मैनेज करना है बस। इसको पास कर दो पीछे। डिफाइन एप्टीट्यूड एज इंटरनल एटीट्यूड डिटर्मिनेंट, कैसे लिखोगे? लिखो, साइड में लिखो, क्या कुछ फ्रेम कर सकते हैं। एप्टीट्यूड एटीट्यूड, क्वेश्चन क्या है? एप्टीट्यूड एज एन इंटरनल एटीट्यूड डिटर्मिनेंट, व्हाट वी कैन राइट? एप्टीट्यूड एज एन इंटरनल aptitude as an internal attitude determinant, as an internal attitude determinant, could be explained as individuals capabilities to perform any task, or we can say that it is aptitude, which influence how an individual react toward any object or acquire knowledge about any object, or acquire knowledge toward any object। फाइन, ऐसे ही लिंक किया जा सकता है और ऑप्शन नहीं है। एप्टीट्यूड इज कैपेबिलिटी, एटीट्यूड इज समथिंग दैट वी आर एक्वायरिंग। इसी तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि एप्टीट्यूड इज समथिंग विच इज इन्फ्लुएंसिंग योर बिहेवियर टुवर्ड द अदर ऑब्जेक्ट, एंड हाउ यू आर गोइंग टू एक्वायर नॉलेज अबाउट दैट ऑब्जेक्ट। फाइन, ओके। नाउ गिव न्यू हेडिंग, फाउंडेशनल वैल्यूज। Foundational values for civil servants।
I think I told you yesterday what is meaning of foundational values. So you can start writing. Foundational values refers to foundational values refers to the key characteristics, KEY, key characteristics of any institutions, of any institution, of any institution. In other words, these are those core principles. These are those core principles that determine the THE, that determine the character, credibility, that determine the character, credibility, and functioning of an institution. Functioning of an institution. Every institution have certain unique set of values. Have certain unique set of values which differentiate an institution from another. Differentiate the institution from another. Comfortable? अगर वो institution उन values को lose करता है, then the purpose of the institution will be defeated. For instance, change the paragraph. For instance, media have foundational value of free and fair reporting. Free and fair reporting. Second, business have foundational value of efficiency and profit. Efficiency and profit. Next, government have foundational value of service motives. Of service motives. Are you ever getting this? Change the paragraph. Similarly, civil services two TOO 2 is associated with certain unique set of values. Certain unique set of values. For instance, what? Now you can tell.
Impartiality. For instance, impartiality. Objectivity. Objectivity. Integrity. Compassion. Compassion. What else? Justice. Justice. Accountability. Transparency. ETC. ETC. I hope you're getting this. Can we say that in absence of these values, the purpose of the institution of civil services will be defeated? Yes or no? Why we need civil services? We need civil services to transform political promises into grassroots level reality. Yes or no? We have noted somewhere that it is political parties, it is the political leaders, the political executives who determine the political priorities. They determine the political priorities. Now, who will ensure that these priorities must be transformed into realities? The civil services. I hope you're getting this. The government came up with a political priority that we want to have one nation, one election. It is the priority of government. Political priority. Now, how to transform this political priority into reality? Who will transform it? Obviously, civil servants. A team was appointed, committee was created, Ramnath Kovind panel was appointed, and many other officers were part of that panel. They investigated, researched, examined, and came up with a report. कि ये तो करना बहुत ज़रूरी है, वन नेशन वन इलेक्शन के बिना तो काम होगा ही नहीं. इनको ज्ञान नहीं देना है कि सर वन नेशन वन इलेक्शन इज नॉट फ्रूटफुल फॉर द कंट्री. नो, दे हैव पॉलिटिकल प्रायोरिटीज. आपका काम है इंप्लीमेंट करवाओ. सो दे विल नेवर सजेस्ट एनीथिंग अगेंस्ट इट. उन्होंने तो तोड़ मड़ोड़ के दे दिया, हो जाएगा, क्या है उसमें, बिल्कुल हो जाएगा. बस पूरे की पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी तैसी करनी है एंड देन हो जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग दिस. ये डिबेट में चल रहा है ना. व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग कि बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट इलेक्शन country faces political paralysis. Country faces, sorry, policy paralysis. Policy paralysis. Because everywhere, every year, 4 or 5 months, in certain part of India, there is MCC, Model Code of Conduct. You can't come up with those policies. You can't enact new schemes, policies. I hope you're getting this. So now what they are saying, one nation one election, तो ये पॉलिसी पैरालिसिस खत्म हो जाएगा. हाउ, कैसे होगा? क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा क्या? MCC will be implemented or not? Implemented. So right now we have model code of conduct here and there in the country, 3 or 4 months every year. Now these 4 months will be concentrated together. So next year in UP there will be model code of conduct. Government could not announce new policy, but no one is stopping Madhya Pradesh to announce the new policies. Madhya Pradesh could announce the new policies. No one is stopping Rajasthan, Chhattisgarh, Kerala from announcing the new policies. There will be restrictions only in UP, Punjab, वहाँ पे election अगले साल. Then very next year such kind of restrictions will there in MP. In 2028, no restrictions could be there in UP and Punjab, Bihar, Karnataka. No one is stopping them. So if we say that one nation, one election
is going to treat this policy paralysis because model code of conduct is in force in some part of country for 3 to 4 months every year, then these 3 to 4 months will be concentrated together. Then in the entire country, no new policy or scheme could be initiated in those 3 or 4 months. Overall, it will remain the same. Are you getting this? एक ने तो ये भी कह दिया कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो देश का जीडीपी ग्रोथ रेट 1.5% बढ़ जाएगा. 1.5% जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा. तो भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट आज़ादी के बाद से नेहरू जी के रहने तक कितना था, और जो गोल्डन पीरियड इंडियन इकोनॉमी का रहा फ्रॉम 2003 टू 2014 उसमें कितना रहा. जो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही 10 साल, इट वाज गोल्डन पीरियड फॉर इंडियन इकोनॉमी. 8% 9% जीडीपी ग्रोथ रेट एवरी ईयर. 8 to 9% ग्रोथ रेट एवरी ईयर. वहां पे तो वन नेशन वन इलेक्शन नहीं था. आई होप यू आर गेटिंग दिस. जीडीपी ग्रोथ रेट के फैक्टर्स आर मैनी. आई होप यू आर गेटिंग दिस. वन नेशन वन इलेक्शन could not have direct implication on the GDP growth rate. But how all these things came into being? Because of the political priorities. They decided we want to do this. Now in civil services will enforce. हाँ बहुत बढ़िया है. तो ऐसा ही तो होता है, ऐसे तो होता है, दूसरा पक्ष हो ही नहीं सकता. Are you getting this? And that is why we have written somewhere, और अगर नहीं लिखा तो we will write these things, that in modern era we don't want a civil servants as a neutral civil servant. No, we don't want neutrality. वो शुरुआती सिविल सर्वेंट्स को माना जाता था यू शुड बी न्यूट्रल. टुडे वी वांट कमिटेड ब्यूरोक्रेसी. टुडे वी वांट कमिटेड सिविल सर्विसेज. कमिटेड टुवर्ड whom? Committed toward whom? Huh? Constituted? No. Civil servants are not activists. They are not activists. They are not journalists. They are not social worker. They are servant of government. So they must be committed to what? Government. Whosoever is in power, which party is in power, irrespective of that, civil servants must be totally committed to what? Party in power. Party in power. Are you getting this? Today they are saying one nation one election होगा तो सब कर हाँ होगा ही होगा बिल्कुल होगा. दूसरी पार्टी आई बोले इट विल नॉट हैपन, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स. बात तो सही है, बहुत प्रॉब्लम्स है, नहीं हो पाएगा, नहीं करेंगे. आई होप यू आर गेटिंग दिस. सो वी डोंट वांट. ये इनिशियल फेज में जब सिविल सर्विसेज के लोगों ने सोचा तो उन्होंने कहा सिविल सर्वेंट शुड बी न्यूट्रल. बट नाउ मॉडर्न गवर्नेंस डोंट वांट न्यूट्रल सिविल सर्वेंट्स. व्हाट वी वांट? committed civil servants. Committed civil servants. But commitment toward whom? Government. Committed toward whom? अरे सरकार गलत करेगी तो सिविल सर्वेंट्स भी गलत करेंगे क्या? देखो इतना सही गलत करना है तो ये नौकरी फिर आपके लिए नहीं है. इतना ही सही गलत करना है तो फिर आप सोशल वर्कर बनो, एक्टिविस्ट बनो, एनजीओ चलाओ. आई होप यू आर गेटिंग दिस. बिकॉज इट इज पीपल हु हैव गिवन पावर टू गवर्नमेंट. गलत हो भी रहा है तो 5 साल बाद जनता सरकार बदल देगी, पर जनता आपको नहीं बदल सकती. आपके दरवाजे जनता के लिए नहीं खुले हैं. नेताजी का घर रात को 2 बजे भी जनता के लिए खुला है. किसी नेता के दफ्तर में जाकर बैठ जाना, भगाएगा नहीं आपको, वो रोकेगा भी नहीं आपको वो. आई होप यू आर गेटिंग दिस. सो वी वांट एक फाउंडेशनल वैल्यू है या नहीं ये डिबेटेबल हो सकता है, बट फॉर मी इट इज अ फाउंडेशनल वैल्यू that civil servants must be committed toward party in power, because it is political parties who will decide political priorities, and the purpose of civil servant is to transform it into the reality. Are you getting this? Because it is political parties who are interested to uphold the constitutional principle of liberty, equality, democracy, socialism, and etc. Are you getting this? They are the gatekeeper of democracy. They are the doorkeepers of democracy. They can strengthen democracy, they can destroy the democracy. Are you ever getting this? Yes or no? Civil servants तो अंग्रेजों के ज़माने में भी थे. भारतीय सिविल सर्वेंट्स ही थे. Are you ever getting this? बट 1950 के साथ पूरा सिस्टम बदल गया. अरे सिविल सर्वेंट्स तो वही थे ना.
ऐसा थोड़ी भारत आज़ाद हो गया तो सारे के सारे सिविल सर्वेंट्स ने इस्तीफा दे दिया, सरकारें बदल गई, रिप्रेजेंटेटिव्स बदल गए, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम बदल गया. So it is political parties and the political masters who will decide the direction of country. I am getting this. As someone has rightly observed, that it is democracy which will govern the country and not a bureaucracy. And not I am getting this. Second, right? These values, these values are quite essential. Are quite essential for realizing constitutional ideals, constitutional ideals like liberty, equality, justice, socialism, etc. etc. Without these values, constitutional promise of a welfare state, what happened? फिर क्यों इतना मजा आ रहा है? कौन बातें कर रहा है? क्यों बातें कर रहे हो? तो क्यों बातें कर रहे हो? क्या बातें कर रहे हैं लोग? वो नहीं सुनाई दे रहा? क्यों भाई, क्यों उन दोनों को डिस्टर्ब कर रहे हो यार? पढ़ने क्यों नहीं दे रहे हो उनको? तुम्हारी बातें सुन सुन के हंस रही हैं दोनों बेचारी बैठे बैठे. ऐसा क्या सुना रहे हो? बातें मत करो, और थोड़ी जोर से करो, हमको भी पता चले क्या बातें कर रहे हो. बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड. ऐसी क्या बातें कर रहे हो कि इन दोनों को ही हंसी आ रही है? नो वन एल्स इज लाफिंग, एवरीवन इज राइटिंग क्वाइटली. Only these two girls are enjoying your conversation. Unique. अच्छा, सब देख रहे हैं और हंस से वाप रहे हो, क्योंकि और किसी को तो मैंने नहीं देखा पीछे पलट के देखते हुए. चलो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, बट वही बातें मत करो यार. आपको नहीं लिखना है आप मत लिखो, और आपको लिखना है आप लिखो, आपको जो करना है करो, बट उनको ऐसे गुदगुदी मत करो. ठीक. I know they are very serious. These two girls are very serious. I could see they are not writing a single letter. I know you are very smart as well. Very intelligent. कौन कर रहा है उसको बता दो, मतलब मुझे बता दो कौन बातें कर रहा है, बता दो. अरे डरो मत, वो कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा. कौन कर रहा है बताओ. अरे बताओ, थोड़ा मजा आएगा. मैं नीचे फोन करूंगा, फिर वो नीचे से आएंगे, फिर थोड़ा ड्रामा आमा होगा. विल एंजॉय. गांधी का देश है, बिना ड्रामे के कैसे अपन रह सकते हैं? आई एम वेरी सीरियस. बताओ कौन बातें कर रहे हो उधर? आपको नहीं पता? आप ही कह रहे हो यार. अभी देखे रहे ना आप, देखो लिख तो रहे नहीं हो, तो ऐसे करके देखते रहो पीछे कौन बातें कर रहा है. तो आप तो आप कम से कम देख के बताओ तो कौन बातें कर रहा है. लिख नहीं रहे हो तो कम से कम इतना ही कर लो, बाकी लोग का हेल्प हो जाएगा. इट इज ऑल्सो फाउंडेशनल वैल्यू. प्लीज बुरा मत मानिएगा. राइट. क्या लिख रहे थे? विदाउट दीज वैल्यूज constitutional promise of welfare state can't be realized. मिला क्या? can't be realized.
in context of India, in context of India, these foundational values, in context of India, these foundational values becomes more crucial, becomes more crucial, becomes more crucial, because point number 1, because point number 1 क्यों हमारे देश में और क्रूशियल हो जाती है? हर देश में ज़रूरी है, बट हमारे देश में और भी ज़्यादा ज़रूरी है फाउंडेशनल वैल्यूज़. क्यों? रीज़न नंबर 1 क्या है कारण? वी आर ट्रांजिशनल सोसाइटी, वी आर, some sectors are quite backward, some are forward, some are conservative, some are modern, some are irrational, some are very rational, extreme diversity, people are moving, yes or no? Many problems could be there in Indian society. One traditional group fighting with another modern group, you are officer in charge, you have to stick to your duties, values, you must pay attention to what your, अगर आप ही impartial हो गए, विद बायसनेस आप किसी कुर्सी पर बैठ गए, तो फिर तो यार वो समाज की लड़ाई तो और ज़्यादा गंभीर हो जाएगा. हाइपर गेटिंग. बेस्ट एग्जाम्पल इज कास्ट सिस्टम. इंडियन सोसाइटी इज फाइटिंग विद कास्ट सिस्टम, यस और नो? अब ऑफिसर in charge, he is also deeply influenced or inspired by the casteism, then how he could do justice in the society? फिर तो welfare state कभी नहीं हो पाएगा. So भारत जैसे समाज के लिए these foundational values becomes more crucial. These are non-negotiable. Are you getting this? Point number 1, Indian society is in transition. Indian society is in transition. India, same point. India is undergoing rapid economic, technological and social transformation. Full stop. Civil servants must take initiatives, to adapt to changing circumstances. To respond effectively to emerging challenges. Respond effectively to emerging challenges. Are you getting this? सोसाइटी तेजी से क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. यस और नो? पीपल आर आर्ग्यूइंग कि 2050 तक कितना आबादी हो जाएगा दुनिया का? 10 बिलियन, 8 बिलियन है अभी, 10 बिलियन. वर्ल्ड इज एजिंग, but India has established herself as a country of youth, a huge demographic dividend, and that is why we want that this demographic dividend must be equipped with right skills. So if youth is equipped with right skill, then we can make maximum advantage of this demographic dividend. अब सरकार तो सिर्फ प्रायोरिटी तय कर सकती है. इट इज द सिविल सर्वेंट्स हु हैज टू
infuse it in the society. I hope you're getting this. Changing circumstances, rapidly changing. Agriculture sector, farmers, many things are moving rapidly. Next point, new point. Managing diversities and conflict. Managing diversities and conflict. Managing diversities and conflict. Within this, you can write India is characterized by immense diversity. Immense diversity. Immense diversity. Full stop. Civil servants often face competing interest and conflicting demands. Competing interest and conflicting demands and conflicting demands. Conflicting demands. If civil servants themselves are immersed in such conflicts, if civil servants themselves are immersed in such conflict, then justice could never prevail. इन लड़ाइयों में अगर वो खुद ही डूबे हुए हैं तो जस्टिस नहीं हो सकता. देन जस्टिस कुड नेवर prevail. Next point, new point. Building trust. Building trust in the society and strengthening faith in the governance. Strengthening faith in the governance. Next point, new point. Protection of weaker section. Protection of what? Weaker section. Protection of weaker section. That is marginalized and vulnerable section. Marginalized and vulnerable section requires compassion, empathy, compassion, empathy, respect, dignity, etc. Fine. Next point, new point. Emerging challenges from outside. That is geopolitical conflicts and tensions. Geopolitical conflicts and tensions, etc. Fine. So you can read in the context of above observations, foundational values in the institution of civil services are unavoidable, non-negotiable. चाहिए ही चाहिए foundational values. Are you ever getting this? Now give new heading. Now we'll see कुछ foundational values. We can start with impartiality and non-partition. Impartiality or non-partition. Impartiality, non-partition.
क्या अंतर है दोनों में? फर्स्ट गिव हेडिंग impartiality and non-partition. Yes, how to differentiate the two? किसी चीज में पार्ट नहीं होना. ओके, एंड impartiality मीन्स पार्ट होना लेकिन न्यूट्रल होकर पार्ट होना. एग्जाम्पल. और कोई ट्राई करो. These are the very common terms. We use it frequently, regularly. Impartiality, non-partition. Impartiality is uniformly treating everyone, and non-partition, उसमें confusion है. See, impartiality is a broad term. Impartiality is a broad term, while non-partition is quite narrow term. When we say non-partisan, it means we are talking about only few objects. Let's say political objects. I am not supporting any political object or any political party. That means I am non-partisan. But impartiality is a broader term. In general, if I am neutral regarding anything, that is impartiality. But when we are considering impartiality in the context of politics, it becomes non-partisan. What I'm trying to tell you that non-partisan is a narrow term while impartiality have broader connotation. For example, I am impartial toward this class. I'm treating everyone equally. I'm treating everyone equally. Fine with this? That is impartiality. Now these two girls started fighting. She is speaking in the voice of a political party and she is supporting another political party. Now when I am showing my impartiality in the context of this discussion, then my act could be termed as non-partisan. Now I am neutral toward these political objects, neither appreciating this nor criticizing this. Are you getting this? So non-partisan is a narrow term while impartiality is a broader connotation. Civil servants need what? Impartiality, non-partition. Non-partition नहीं चाहिए. Non-partition होना चाहिए नहीं होना चाहिए. Non-partition भी होना चाहिए. Irrespective of party in power, you have to carry their aspirations. ऐसा नहीं हो सकता that I am favoring BJP or I am favoring Congress or I am favoring समाजवादी पार्टी. आपको किसी पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट की तरफ झुकाव नहीं रखना है. The party which is in power, you have to be committed toward that only. Are you getting this? You can't be like this. अगले चुनाव के बाद अपन लोग एक्टिव हो जाएंगे क्योंकि फलानी पार्टी की सरकार बन जाएगी. You can't behave like this. Are you getting this? So you can write impartiality and non-partition. Impartiality and non-partition are often used interchangeably. As they are closely related. However, they are not the same. They are not the same. Full stop. Next paragraph. In general, these two terms imply
In general, these two terms imply being fair, being fair, being objective, being apolitical, being apolitical. Nevertheless, these two terms differ significantly. Differs significantly. What we are writing, many times they are used interchangeably, but they are not the same. But in general, colloquially, it is mean being fair, being objective, being neutral, without biasness. In general, we say this, but there are certain differences. Now we can write certain differences. क्या लिखा आपने? They are not the same or they differ from. क्या लिखा? They differ significantly. For instance, point number 1. For instance, उदाहरण के तौर पर, point number 1. Impartiality means treating everyone fairly. Treating everyone fairly. Without bias. Without getting bias. Without getting bias. That is being neutral and objective. That is being neutral and objective toward all objects. Neutral and objective toward all objects. Toward all objects. Fine? Toward all objects. All objects, whether it is anything, a caste, a government, a party, anything. Fine? Next point. No, not next point. While on other hand, non-partisan is considered as being apolitical. Being apolitical. Or not supporting any political party. Not supporting any political party or politically neutral. Or politically neutral. Comfortable? Next point. Impartiality is a broad concept. Impartiality is a broad concept than non-partisan. Next point, new point. Impartiality focuses on fairness in decision making. Which demand continuous application of mind. Continuous application of mind and being calculative. While non-partisan
while non-partisan focuses on neutrality towards political ideologies. Neutrality toward political ideologies. Political ideology. That means policies of any elected government are implemented with equal commitment Next point. Yes. एक्सपांड तो करना पड़ेगा. 100 वर्ड में आ गया लिखने को, 150 में तो क्या लिखोगे? दिस इज कॉल्ड सोशल साइंस. एक ही बात को 15 तरीके से एक्सप्लेन करना. नेक्स्ट पॉइंट. impartiality imposes more external commitment to remain fair. Impartiality imposes more external commitment to remain fair. To prevent discrimination and favoritism. Are you getting this? While non-partisan prevents political influence and misuse of administration. I hope you're getting this. Change the paragraph. In nutshell, impartiality is about being fair to everyone. While non-partisan is about politically neutral. Fine. You can write, change the paragraph. A civil servant could be non-partisan. But may lack impartiality. I hope you're getting this. Officer is there. He is not supporting any political party, politically neutral, but he is not fair to everyone. He himself sank in casteism, communalism. He had hatred towards certain community, certain people. So these people are non-partisan, but they are not impartial. Imagine a person, there is a flood and the officer in charge has distributed those things which are provided by government to everyone equally. That is
impartiality. That is impartiality. But now he's saying, I will not implement these policies rightly because they are advocated by this party. That is partisan. That is a partisan. What we want? Non-partisan or impartiality or both? We want both. But what usually happens in India, that it is quite frequent that an officer could be a non-partisan, that we could expect. Many people are there who are non-partisan, nothing to do with political party. Log फालतू का इनका. They are non-partisan, but they are highly impartial. But they are highly. Many examples are. Article 15 movie is the best example of this. Article 19 movie is immortal for you civil service aspirants, because you can quote that movie again and again, again and again. In fact, that is based on real incidents as well. Real incidents as well. I hope you're getting this. The main problem with India is that a civil servant quite be non-partisan, but वो impartial है, इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है. The main problem is impartiality. The main problem is impartiality. Now the question arises, how to ensure कि वो partial भी रहे और non-partisan भी impartial भी रहे और non-partisan भी रहे. मसला हो गया है तो यू कैन चेंज द पैराग्राफ. 2 मिनट और लेंगे फिर खत्म करते हैं. चेंज द पैराग्राफ. These two principles have broad application in administration. And have utmost relevance which could be examined in following points. Write point number 1. Civil servants has to function in highly heterogeneous environment. Heterogeneous environment. In terms of caste, religion, prejudices. Caste, religion, prejudices, etc. Next point. To protect constitutional values. Prevent abuse of power. Ensure continuity in governance. ये सब अलग अलग पॉइंट्स हैं. Ensure continuity in governance. etc. India is facing diverse challenges like terrorism, communalism. India is facing diverse challenges like terrorism, communalism, Naxalism, casteism, etc. And there are new problems in terms of social media. Fake news, etc.
etc. In these situations, only impartial administration can do justice. In this situation, only impartial administration could do, क्या कर सकता है, could do justice. See, ये सारे points will remain the same for every foundational value. Let's say we are talking about integrity, honesty, and now question arises, what is the relevancy of honesty and integrity? Same point. In addition to this, हमने इसको explain करने के ऊपर भी लिखा था why foundational values are needed. 5-6 पॉइंट लिखे थे ना, वो सारे की सारे पॉइंट यू कैन रिपीट हियर एज वेल इन टर्म ऑफ रेलेवेंस. क्या रेलेवेंस है इसका, वो सारे पॉइंट कॉपी कर सकते हो. 2-3 पॉइंट आपने अभी लिखे, इसीलिए वी वांट कि इम्पार्शियल और फलाना फलाना होना चाहिए. नाउ वन मोर हेडिंग, ओनली 5 to 7 वर्ड्स. हाउ टू इनकलकेट दिस, हाउ टू इनकलकेट दिस, हाउ टू इनकलकेट दिस. दिस मतलब क्या, यही इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीशन. हाउ टू इनकलकेट, बताइए कैसे इनकलकेट होगा. कैसे बनाए लोगों को इम्पार्शियल, हाउ टू इनकलकेट दिस. ट्रेनिंग तो बाद में, सोशलाइजेशन. राइट, फर्स्ट पॉइंट सोशलाइजेशन, राइट सोशलाइजेशन, राइट सोशलाइजेशन. और हमारा सोशलाइजेशन हमको क्या बता रहा है, हीरो बनने का है. तेरे को क्या बनने का है, हीरो बनने. हुआ ना इंदौर में 2 दिन पहले, वन बॉय, उसने एक गाड़ी का शीशा तोड़ दिया. गाड़ी पे चढ़ा वो, he climbed over the car and he thrashed into the windshield a bottle of whiskey. कांच टूट गया. और वो नीचे खड़े होके अलग अलग इशारे कर रहा था. जब वो नीचे खड़ा होता कार के, अजीब ऐसे इशारे कर रहा था. वो फिल्मों में नहीं करते हैं लोग कि अत्ता माजी सटकली टाइप कर रहा था वो. फिर अगले दिन टांग तोड़ी पुलिस वालों ने. लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था, ढूंढ लिया उसको. क्या ज़रूरत थी करने की, क्या ज़रूरत थी. ऑब्वियसली एक तो नशे में होगा वो, जिस बॉटल से उसने अटैक किया वो उसी ने खाली की होगी. लेके घूम रहा होगा. अब उसका एक्सप्रेशन देखना, और नीचे खड़ा हुआ है और अजीब एक्शन, अजीब ही पागलपन कर रहा है. ऐसे अपने आप को पीछे से पीट रहा है कि क्या तू समझ नहीं रहा मेरे को भाई. फिर गाड़ी पे चढ़ता है और शीशा तोड़ देता है. ये पुअर सोशलाइजेशन का नतीजा है. सोसाइटी हैज़ प्रीच्ड अस, हीरो बनने का, अपने को क्या बनने का, हीरो. सब अपने को ही देखेगा. तो सर पे तो सींग लगा लो, वैसे ही सब तुमको देखेंगे. हाँ, ये बहुत कॉमन चीज़ है ना. अगर आप क्लास में चाहते हो सब आपको देखें, तो आप क्या करो, एक मेले में जाओ, लाल सिंह आते हैं, अपन लाइट भी बंद कर लेंगे क्लास की, उसकी जला देंगे, बढ़िया लाल सिंह दिखेंगे. कसम से हम सब आप ही को देखेंगे, कोई इधर उधर नहीं देखेगा. और मैं तो बिल्कुल भी नहीं, पूरा 1 घंटा पूरा भौरकुआ ही आपको देखेगा. बट वाई, क्यों करना चाहते हैं हम ऐसा. ये सोशलाइजेशन का इशू है. सोसाइटी हैज प्रीच्ड अस दिस. आई एम फॉरगेटिंग दिस. 5-6 वर्ड की बात हुई थी, एक ही लिखा है, लिखो आगे. सेकंड, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, राइट सोशलाइजेशन, राइट ट्रेनिंग. नेक्स्ट, insulation from external influence, insulation from external influence, external influence. Enforcing conduct rules. Next point, enforcing conduct rules. Next, balance between reward and punishment, balance between reward and punishment. Inculcation of scientific temperament, inculcation of scientific temperament, etc. कल देखेंगे आप.